Hello, Assalamualaikum. Hello, Aslam. Wait. So, my name is. Please like, share, subscribe. Final. Take 3. Take 3. 1, 2, 3, 4. Hello, Assalamualaikum. Welcome to the first episode of the 3am Call, a podcast where two friends from opposite sides of the Indo-Pak border get together to discuss with you their stories, their opinions, their rants, and even their vulnerabilities. My name is Rafia Jafar, and with me is Hashima Jain, and we are your hosts for this podcast. नाम लेते मुझे याद आया. Do you think if somebody who doesn't know us is watching this, they can guess who is from which side of the border? It is for them to क्या guess. मुश्किल It's a है ना? test for them. We I think don't. बहुत मुश्किल है ये पता करना कि जैन नाम की लड़की कौन से मुल्क से है. That's true. Yeah, I get you. Very difficult. But ठीक है. Okay, let's. अरे मुझे स्टोरी याद आई. I know which story is this, but yes, I would want everyone to know that story. Please go ahead. हाँ, मैं जो है I don't think that will campus sit से बाहर very जाती well. I don't think that. But ठीक है, चलो. Okay, go ahead. Yeah. मैं कैंपस से बाहर जाती थी तुम्हारे आईडी कार्ड के साथ बिकॉज हमारी कुछ ऐसी सेटिंग हुई थी और मैंने मास्क पहना हुआ था. ठीक है. और आई वाज रियली कॉन्शियस. तो मैंने जब सिक्योरिटी गार्ड को काट दिया मेरे हाथ में बहुत भारी सामान था बिकॉज यू नो मैं कितना भारी सामान अंदर बाहर करती थी. तो मैंने सामान रखा. ठीक है. काट दिया और सामान रखा और मेरे मुंह से ना आउट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस एंड आल्सो बिकॉज इट वाज वेरी हैवी मैं नीचे गई वो रखने के लिए काट देके और मेरे मुंह से कभी अल्लाह. और जब मैं नीचे थी ना मुझे ख्याल आया कार्ड में जैन लिखा है. I don't think. Okay, I think that is a perfect That instant. card was well versed in South Asian. Exactly my point. I think this is a perfect instant of you overthinking. वो बहुत ही उसके पास और इतना टाइम नहीं है लाइफ में कि वो बैठ के मैच करेगा कि नहीं सरनेम तो जैन है South Asian और लेकिन उफ अल्लाह. I think what South Asian concoction is this? I think that is just you overthinking. चलो एक बार के लिए let's assume कि चलो ठीक है उनके दिमाग में आया भी तो what I am this person who is embracing all kinds of religion. I was living with you for quite a while. So maybe I'm just. Except it wasn't you. Except it was me और मेरी फटी हुई थी कि मैं गलत कार्ड से बाहर जाती. ठीक है ना? I think that's a lost cause already given all the things we have done. So let's move beyond the. Let's get on with our episode. Yes. What are we discussing today? Do you want to? Yeah. Start. So today, this is the first episode, and today we bring for you a topic which maybe we have talked, not we, like people have talked about it already, but this is something we again would want to discuss, which is internalized misogyny. So Rafia, would you like to tell us something? Would you like to share why do you want to talk about internalized misogyny? And then maybe we can talk about why I want to talk. I think actually the reason this topic is very important to me because I realized growing up at around 18-19 years, when I was around 17-18 years old, कि मेरा जो सारा अपने खुद के बारे में ख्याल है, ठीक है ना, of how I am and why I'm different and you know how I'm not like other girls, this is all just misogyny. ठीक है? Yeah. It was. And मजे की बात ये है कि as I've thought about it more, I realized that my internalized misogyny was a misguided way of me trying to fight patriarchy. I mean, because patriarchy, it's so entrenched and it's so, I don't know, deep rooted कि उससे लड़ने के लिए भी I think आप मजीद जाल में फंस जाते हैं. True. Because you know the way I grew up was I grew up around a lot of
male cousins, brothers, etc. ठीक है? And it's very normal. मतलब एक तो हम सारे वैसे तो देसी हैं तो इमोशनली रिप्रेस्ड, ठीक है? फिर हम तो एक नेक्स्ट देसियों में भी नेक्स्ट लेवल के हम इमोशनली रिप्रेस्ड, ठीक है? तो हमारा the whole environment was कि ओ एक दूसरे की टांग खींचो, एक दूसरे को मजाक उड़ाओ, ठीक है ना? और इन चीजों पे ज्यादा भी मजाक उड़ता था. मतलब if you're a girl and you dressed up a little girly, या कि आपको नहीं भी CCDC आपकी अम्मा ने कैसे आपको जैसे मेरी अम्मा ने किया था, तो खूब मजाक उड़ता था, ठीक है? प्लस environment I think मैंने किसी ने चाहे डायरेक्टली बोला हो या ना बोला हो, when I was growing up मैंने अपने environment से बहुत ही ज्यादा पिक कर लिया था that women were really looked down upon. They were looked down upon as, you know, they were thought of as not smart. They were thought of as frivolous, ठीक है? तो ड्रेसिंग पे मजाक उड़ाओ, उनके बोलने के अंदाज पे मजाक उड़ाओ. I mean, I hate it when boys do the girl voice. I hate it because they do it as a way to, you know, demean women. मतलब आवाज को भी हमने demean कर दिया है. Oh, this pitch is also something to make fun of. So I'm also very insecure about my voice. When I will edit this, I think I will just cry out of embarrassment. Anyway, so growing up in this environment now, so when I was a kid, मैंने ये सब absorb कर लिया, ठीक है ना? And I was a kid who wanted to do things like play cricket, wear jeans t-shirt and not सलवार कमीज, ठीक है ना? और ऑब्वियसली लड़कों को इतनी आज़ादी होती थी, तो एज ए वुमन मेरे अंदर भी ये नॉर्मली होगा कि अच्छा अगर मैं लड़का होती तो मैं यूँ करती या मैं कूल होती. एंड ऑल्सो बिकॉज आई थिंक कि हर चीज़ जो यंग लड़कों को या पसंद होती है दैट इज कूल, एंड थिंग्स दैट आर डीम्ड गर्ली are just or not like very uncool. True. They're seen as dumb and something to be made fun of. तो मतलब अगर आप स्पोर्ट्स या गेम्स खेल रहे हैं तो कूल हैं. Yeah. और अगर आप गर्ली हैं, I mean, if you're acting like a boy, external validation रहता है काफी कुछ, which is exactly my case also. तुम तो मेरी therapy कर रही हो. Yes. मैं तुमसे सीखा. I never thought. हाँ, because external validation, people like it. People like it. I'll give you one recent example. अभी I was talking, मैं घर पे मैं बैठी थी, मेरे पापा बैठे थे and my grandmom. हम लोग बैठे थे. My papa was just telling my grandmom something about me. He was just saying कि ये करती है something like that. Let's not go into that. तो मेरी अम्मा, my grandmom, she said, अतुल ये तेरा बेटी नहीं तेरा बेटा है. So you know, it comes of validation तो हमेशा उसी जेंडर के थ्रू मिल रहा है ना आपको. So I get it, like growing up that was one reason why, I mean for you and for me also, why we acted like boys, because एक validation मिलता है. I mean friends समझते कि यार ये cool है, कुछ भी कर लेगी. And there have been instances when I have stepped out of my comfort zone to act like a boy and be labeled as cool कि चलो. And I have been out of my comfort zone very visibly, but still I was doing it because नहीं ये तो cool चीज़ है, ये तो करनी ही चाहिए. And as you said before कि लड़कियाँ तो कुछ भी करती हैं, डम होती हैं, ऐसे चलती है, वैसे चलती है, ऐसे ड्रेस करती है. They are too feminine to be able to, I don't know, run or climb that wall, or they dress up like that they can't do all of that. So I always went against these things कि चलो कुछ तो validation मिल रहा है. And which is a very, क्या मैं validation की भूखी थी? I don't know. But we all are. The environment is very stingy when it comes to validation. As a human, you need validation भाई, और हमें कहाँ मिलती है? That's true, yeah. Okay. Also, पता है, I realized जब मैंने थोड़ी सी सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू की when I was like what 15, 16, तो उधर मैंने स्टीरियोटाइप क्या होते हैं पढ़ा. मैंने ये पढ़ा कि ओ भाई अगर कोई डिश वॉशिंग कमर्शियल है तो उसमें सिर्फ हमेशा औरत को दिखाएंगे वगैरह. तो ये थोड़ी सी मेरी फेमिनिज्म की अंडरस्टैंडिंग हुई. तो I justified my behavior by saying कि ओ मैं तो you know female stereotypes तो true. Because not only do they not give you validation for being a girl, they also don't want you to act like anything exactly else. लड़की हो ये क्यों कर रही हो, लेकिन validation भी वैसे मिलेगी. लेकिन
So I just thought I was breaking barriers कि हाँ मैं लड़की हूँ और मुझे क्रिकेट पसंद है, तो हाँ मैं लड़की हूँ और मैं जीन्स पहनती हूँ, और हाँ मैं लड़की हूँ और मैं जाके खेलती हूँ लड़के के साथ. So in a way I thought I was breaking barriers, and I kind of was, but patriarchy is so twisted that I realized that I'm breaking those barriers by accepting the standards, masculine standards that patriarchy has. True. I think ये जो bridge है ना, this खराब हो गया इतना बेटा. I think this bridge you are talking about. कि चलो you are supposed to act that way, but then you are scolded for being that way. कि अरे लड़का ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो, but लेकिन आपको validation भी मिल रहा है. I think ये जो ये bridge है ना, which I call something like being the rebellious child. आप धीरे धीरे आप धीरे धीरे वो कर लेते हो, इंटरनलाइज कर लेते हो. इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर बिहेवियर. समझ रहे हो? एंड मे बी वी स्टिल डू दैट. आई डोंट नो, मे बी आई स्टिल डू दैट, बट आई हैव बीन ग्रोइंग अप विद इट. लाइक आई हैव ग्रोन अप विद दैट थॉट प्रोसेस सो लॉन्ग कि मुझे रियलाइज भी नहीं होता है until somebody points it out. जैसे मैं was talking to you and we were talking about it once, I remember, तो मुझे रियलाइज हुआ. अदरवाइज ये जो ब्रिज है, दिस इज अ वेरी, इट्स लाइक अ स्टीप स्लोप. हाँ, it's a slippery slope. Yeah, slippery slope. Yeah, that would have been the right word. हर औरत जिसके अंदर होता है. I don't think it is possible to be born in a patriarchal world and not internalize misogyny. मतलब क्योंकि आपके सारे standards जो आपको नहीं भी पता होते ना, आशमा masculine है. All the standards are masculine. ठीक है ना. एंड ये तो हम स्लोली इंटेलेक्चुअल थॉट बढ़ रही है और हमें समझ आ रहा है, हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें तो समझ आ रहा है कि ओह, दिस इज इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी एंड इट इज सो एक्सेप्टेबल. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल, इट इज सो एक्सेप्टेबल हमारे यहाँ औरतें बैठ के, अरे उसने कितनी तेज लिपस्टिक लगाई, and there you go. तुम भी तो ऐसी हरकतें करती हो. Yeah, I have been there, done that. Yeah. So you are supposed to be feminine and wear makeup, but when you overdo it, the line is so thin that when you overdo this arbitrary and stupid line, then you are criticized for being too much also. And और जो तुम्हारा वो CCDC वाला चक्कर है ना जो तुमने बनाया था, जरा बताओ CCDC क्या होता है. तो in my defense मैंने बनाया नहीं था, मुझे बताया गया था. But हाँ, I have been using it. So CCDC stands for चमचमाती हुई ढिंचैक छमिया. चमचमाती ढिंचैक छमिया. That is so. I know. If anybody didn't know you were Indian up till now, they would know you're Indian because chamiya, ढिंचैक. So Hollywood. I know. Yeah. Again, in my defense, I have one more point. I really enjoy saying it because it's very sexist. In my defense, one more. Have a boy version. Wait. In my defense, one more point. Because I am not like that, so I have a hard time accepting the fact that there are some people who are different than me. Which is again stupid. लेकिन वो एक बार निकलता है ना अंदर से, that you call out on people who are different. I'm not like good different, bad different. I think when they are different, तो हमें भी ये होता होगा, kind of we question ourselves कि कहीं ना कहीं at a subconscious level कि ओ हम में तो कोई problem नहीं है, and then denial, and then you go into denial. हाँ, you go into denial कि हमें और सामने वाले. It's like, I can't believe I'm saying that out loud. It's like this tendency of, I don't know, feeling better about yourself by, I don't know, trash talking someone else. Oh God, should I have said that or not? It's not like I do that. It's a different story altogether. ये फिर दूसरा एपिसोड हो सकता है, but खैर है. So yeah. So talk about, tell me about who is the Chamchamati ढिंचैक छमिया, and there's so many people I know who are CCDCs, but can I say this here? This is not what I meant. I didn't tell you to trash talk people. The way you ask the question, like, tell me about the CCDCs, like, oh, who are the CCDCs? हम बैठ के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन
It's all fun. People know better. They will learn from us. I mean, they will learn from me and my mistakes. I won't put it on you here. Another point which I want to talk about, अभी तो हम बात कर रहे थे, it came to my mind, this idea of slut shaming. Because slut shaming is also very similar to this. Because when you talk, एक तो मुझे इस word slut से ही problem है. Have like एक तो मुझे एक question का answer दो. Is there a male equivalent of this term slut? Or is slut a gender neutral term? Is it a gender neutral term? I don't think so. Is it a gender neutral term? I don't know. Because the moment we say slut, एक औरत की पिक्चर ही आएगी. The implication is that it's a girl. It's a girl, है ना? So एक तो मुझे ये मसला है कि उसका कोई भी male equivalent word नहीं है. ठीक है? Like yes, let's say sex negative in an equal way. Exactly. And shame all people. So, yes. So okay. The gender, the male equivalent word we have is something like, I don't know, playboy or Casanova, which is not as derogatory as slut. Yeah, it is not derogatory at all. Negative connotation नहीं होती जो. Exactly. Okay, so now when we break down who exactly is a slut, which is again problematic in itself. I mean, nobody can be a slut, like, because we can take slut to be a positive word, लेकिन अभी तक जो इतने negative connotations attach हो चुके हैं उससे, तो obviously it's a negative term in our heads. Okay, so if we look at slut isolatedly or a playboy, Casanova, whatever, as isolation में, तो slut, I don't know, is a person, is a girl who is like, I don't know, loose character. I don't know how do you define slut. Who sleeps around or whatever. But at the other hand, Casanova, playboy, is a boy who sleeps around. Oh my god, he sleeps around, he's enjoying having the time of his life. Okay? So like who... Oh ये ना तू करे तो slut मैं करूँ तो तू करे तो slut मैं करूँ तो slut. है ना? So I have a real problem with this. But then I have met women who indulge in slut shaming all the time. Because एक तो इसके भी दो reasons हैं. Because we have these strict boundaries around ourselves. I mean, a lot of girls. And coming from a desi culture, we do meet a lot of girls who have these boundaries about themselves कि क्या सही है, क्या गलत है, लोग क्या कहेंगे. And this is not like कि लोग क्या कहेंगे वाला बड़े generation वाला. Even the people around me, because there are people same age around who judge you for the same thing. Like the whole boundary, and first boundary go, and second, you have grown up hearing that shit. Okay, that ki nahi aise you can't talk to blah blah, you can't talk to blah and blah, you can't wear this, you can't wear that. I mean, coming from my desi family, I didn't have like, yeah, I did have some restrictions कि नहीं ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, जब अकेले रहोगे तब पहन लेना. और even I have heard shit like कि जब शादी हो जाए तब कर लेना and all that. Yeah, which makes me so sad. It's very dramatic when you this is it. Yeah, which is sad. Has it been said? Not like एकदम directly, but yeah, undertones यही होती है. I mean, हाँ, because there's a kind of एक तो चलो खैर, that's a different thing altogether. Let's not go into that. Yeah, let's move on. What was I saying? हाँ, so I was talking about women who indulge in slut shaming also. Okay, because they think what we are doing and what they are doing is so different, and also what we are doing is right and what they are doing is wrong. Okay, so what is this dimension, what is this criteria of being wrong, being a slut? I mean, yeah. Who defines that? I mean, what would you want to say about that? I think उसमें एक दो चीजें ये भी होती हैं कि when you have internalized misogyny, so you believe that your gender is kind of lower. Yeah. You do believe badly about women. You have negative feelings about women even though you are one yourself. So when you look at somebody who goes, against, who kind of confirms the negative feelings that society has और मन के देखो औरतें तो ऐसी होती हैं, ठीक है ना, कि एक औरत जैसी भी होती तो ऐसी होती है और ये तो बुरा ही है, ठीक है, तो कुछ अपने अंदर भी मनता होगा, because at the end of the day आप अपने जेंडर को जब नीचा कर रहे हैं तो कुछ तो अपने बारे में भी नेगेटिव फीलिंग होगी ना. तो किसी और को बुरा देख के
काइंड ऑफ एक एम्बैरेसमेंट सी भी होती होगी कि ओ देखो ये हमारा नाम खराब कर रही है या समथिंग लाइक दैट, कुछ तो आपके अंदर होता होगा व्हिच काइंड ऑफ यू नो makes you want to lash out at that person, right? To feel better about yourself. That's true. Yeah. ठीक है. कभी आप religion use करके करेंगे, कभी आप कल्चर यूज करके करेंगे, ठीक है ना. इंटेलेक्चुअली इसकी बहुत सी रैशनलाइजेशंस होंगी, बट अगर इफ यू गो डीप एंड इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, इट इज समथिंग यू नो यू फील बैड for some reason at subconscious level, so you want to make the other person feel bad. Yeah, that's true. It's like it comes down to this only, that to feel better about yourself you end up and also तुम हमने CCDC डिस्कस कर लिया, yeah, बट तुमने जो है एक्सप्लेन नहीं किया वो क्या है, क्योंकि तुम्हें तो पता है, लेकिन आई एम श्योर बहुत से लोगों को नहीं पता. चमचमाते ढिंचैक छम्मिया. हाँ, but who is that? Oh, okay, so I moved on to different topic. मेरे लिए नहीं था. Okay, Chamathi Dinchak Chamya is someone who is like, I feel bad now defining who is CCDC now that we have talked about it. Just explain who that is and don't. Okay, yeah, sorry. I apologize. I also apologize to all the people who have called CCDC. Okay, coming back. CCDC is someone who like overly dressed and very ऐसे चमचमाते हुए कपड़े पहन रखे हो, and she's like standing out amongst the crowd and like oh देखो CCDC जा रही है, because I don't know she is wearing this blingy. So in short, women's dressing. Yeah. एक तो it's feminine dressing, तो वैसे ही उसमें कोई problem है. Yeah. Plus it is too much and it is too loud. और society से इतनी femininity बर्दाश्त नहीं होती. Yeah. I mean, yeah, too loud. But उसी, you know, when you talked about this, I was thinking कि यार जब मैं A level में थी ना, हमारी सुबह संडे को क्लास होती थी, ठीक है, और सुबह संडे को क्लास होती थी तो लोग जाहिर है कोई तैयार तो नहीं होके आता था, तो उसमें कुछ लड़के थे वो इतने कोई हद के लेजी थे कि जिन कपड़ों में वो सोते थे और जिन बालों के साथ वो लुढ़कते थे वैसे ही आ जाते थे, तो लोग बाहर खड़े रहकर यूं करके अंगड़ाई लेते थे और उनकी शॉर्ट इतनी नीचे होती थी, उनकी हमें अंडरवेयर देखनी पड़ती थी. इतने डिस्गस्टिंग थे वो, मतलब मेरे दिमाग में इमेज आ रही, मैं जा रहा हूं टाइम ट्रैवल करके. But nobody. I have something to add to this disgusting image. Nobody shamed that. It was That's not true. weird. Yeah. People were not looking at him. और मैंने उसका नाम भी बना लिया. अगर हमने CCDC करना है तो उसे जेंडर बैलेंस करने के लिए हमें CC भी लिखना चाहिए. And CC is चूतिया इन चट्टी. But then wait, there's a problem with CC. But because बस CC जेंडर न्यूट्रल हो गया भाई. Bad and anything which men do is good. हालांकि वो कितनी सहज लग रहे होते हैं. But I have a problem. Wait, there's a problem with CC. CC तो जेंडर न्यूट्रल हो गया है. ये चड्डियाँ तो अपन लोग भी पहनते हैं ना. We need something more male specific. Yeah. Is it चूतिया? Oh. Yeah. Okay. चलो ठीक है. बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जिनका हिंदी खराब हो, हिंदी थोड़ा आता हो, and चलो ठीक है, खैर है, ओके. अच्छा, छमिया का मेल वर्जन क्या होता है? यही तो मसला है ना, इन सबके मेल वर्जन्स मिलेंगे ही नहीं अपन को. That is the problem. यही तो हाँ या I have something more which I won't say it out. Something worse than चूतिया इन चड्डी is fine. जगह चूतिया इन चड्डी is fine. अपन की तो अंडरगारमेंट में इतने सेक्सुअलाइज्ड है कि कौन That's true. मैं दिख रही है. अपनी तो नहीं दिख सकती. स्लट शेम हो जाएंगे अपने. घर के अंदर भी छुपा के रखते हैं. Oh god, yeah, that reminds me of that day. But खैर है. Okay, yeah. So CCDC, what more do you want to say? I had some things in my mind, but I can't think of them right now because I don't know why. Wait. हाँ. Yeah. मेरा एक और internalized misogyny जो मैंने अभी I think मैंने recover कर लिया उससे. Okay. I hated the color pink. You hated the color pink. I did not find it attractive. Yeah. When I wore it, तो मुझे अपने आप जैसा लगता ही नहीं था, क्योंकि obviously मैंने अपनी तो femininity ऐसे suppress की.
मैंने अपनी फेमिनिटी भी बहुत सप्रेस की हुई है। रिसेंटली मैंने कोई उसे एक्सप्लोर करना शुरू किया है। 2019 में मैंने अपनी पहली लिपस्टिक खरीदी थी। 19 वाओ, इतनी लंबी हो वाओ। बट आई ओवरकेम इट, सो बट एट लीस्ट डिड दैट, मुझे अच्छा लगता था। और मैं जहाँ देखती थी अपने ऊपर भी मुझे लगता था कि मेरी पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी पर्सनालिटी भी अपनी सोच के हिसाब से थी और मुझे देखने में भी ना अट्रैक्टिव नहीं लगता था। बट मुझे ना एक बार दिमाग से रियलाइज हो गया कि ओह दिस इज इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी एट सम पॉइंट इन टाइम। लेकिन वो दिमाग को इमोशन में ट्रांसलेट होने में टाइम लगता है। दैट्स ट्रू। बट वंस आई हैव रियलाइज्ड एंड आई केप्ट रिफ्लेक्टिंग अपॉन इट, ठीक है, तो मतलब अब मुझे अब जेन्युइनली आजकल मैं गर्मियों के लिए कुत्ते ढूंढ रही हूँ तो मुझे पिंक ही अच्छा लग रहा होता है। बट which is good, I like it. Yeah. और मैं एक्चुअली पिछली बार जब हम रिकॉर्डिंग करने बैठे थे मैं पिंक ही पहन के बैठी थी। मैं बताऊंगी, देखो मैंने पहन लिया है, आई हैव ओवरकम माय मिसोजिनी। लेकिन अब आज मैंने उल्टा ब्लू ही पहन लिया। नहीं है मेरे पास इतने पिंक, बट या आई रियली ओवरकम दैट। आई रियली मतलब मुझे पहले शेड होती थी पिंक से, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज़ मैंने सारी फेमिनिटी को जो है डीमोनाइज रिजेक्ट कर रखा था। दैट्स ट्रू। Okay. And I'm sure I was really unbearable मेरी at least A level वगैरह की दोस्तों से। Now that I think about the shit I've said to them, I'm like, good. You can apologize. You can apologize. This is a good platform. तुम माफी मांग सकती हो उनसे। मतलब मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। Simply एक मेरी दोस्त एक दिन बड़े प्यारे से पंप्स के आगे बेचारे बहुत प्यारे थे, ठीक है, तो मैंने बोला इतना तैयार हो गई क्यों आ गई? Wow. हम तो मैच देखने जा रहे हैं। Okay, there is one thing. Okay, so now this is also very ऐसा ये जो boundary होती है, this is very you have to like work around it very carefully because कुछ चीज़ें होती है ना, you make a comment like कि चलो ठीक है, if you have dressed that way, it is not like situation specific कि चलो ठीक है अपन कहीं जा रहे हैं, अब ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, उसमें कोई भी अगेन लड़की कोई भी चलो हील्स पहन के आ जाए तो मुंह से निकलेगा ही ना कि अरे ये क्या पहन के आ गई हो, because that is a मतलब कि सिचुएशन स्पेसिफिक। कितने लड़के होते हैं जो अपनी मर्जी से कुछ पहन के आ जाए और तुम्हें वियर्ड लगता है कि जो है अबे ये क्या पहन के आ गया। नो, आई एम जस्ट सेइंग इन द पॉइंट इन द सेंस कि मतलब वो इनकन्वीनियंट होगा ना उनको खुद को ही। What if you have to trek up a mountain? वो जूते जो उसने पहने थे वो इनकन्वीनियंट नहीं थे। Okay, हाँ, I am not talking about प्रॉब्लम। I am not talking about that situation. I am just talking in general. कि अब ये भी तो ध्यान में रखना because you are doing a particular activity, so you have to be dressed किसी ने ट्रैक पे हील पहनी हुई है, ठीक है, तो maybe if someone is calling out, the whole group is suffering because of that. Exactly, हाँ मैं यही बोलना चाहती हूँ, मतलब कि you address it in a way कि चलो ठीक है खुद को भी inconvenience होगी, वो भी होगी, because कई बार होता है there's a lot of ऐसा misrepresentation movies also। मुझे movies के नाम नहीं याद आ रहे, but ये कितना ऐसा क्लीशे सा एक सीन मेरे दिमाग में आ रहा है, सिंबल सा दिमाग में आ रहा है कि लड़कियां दिखाने के लिए they'll end up in a place अजीब से ड्रेस, weirdly dressed। How many times does that actually happen, or is it just like a media representation? Exactly. कोई dumb लड़की दिखानी है, कोई bitchy लड़की दिखानी है, कोई विलन दिखानी है, ऐसे दिखा देंगे और मेकअप करिए ट्रैक के, जब वो हीले पहन के आ गई है। हाँ, exactly, कितनी बार दिखाया जाता है ऐसा। I can't think of a movie right now, but I'm sure people get it। इतना कितनी मतलब बहुत सारी मूवीज में ऐसा होता है, especially these गोरा मूवीज। कोई ट्रैक सीन नहीं था, लेकिन मैं में राखी सावंत को बहुत ज्यादा वो करके दिखाया हुआ था। हाँ, उसका कैरेक्टर भी ऐसा ही दिखाया था। To be kind of yeah, that's true। I can't think of a movie right now, but मेरे दिमाग में सीन्स आ रहे हैं ऐसे कितने ऐसे मतलब। और मजे की बात है, this is a classic example। वैसे मैं हूं ना में राखी सावंत को कुछ ज्यादा ही ओवर ड्रेस दिखाया था because she was supposed to be you know whatever that kind of। लेकिन संजू जो इतनी बैडास दिखती थी, हाँ, क्या हलवा एक एक्सेप्टेड लेवल ऑफ फेमिनिटी पे ले आए कि भाई उतना वियर्ड है। और क्यों बिकॉज एक लड़के के वैलिडेशन के लिए बोलो। और किया भी किसने, मतलब वो तो चलो शाहरुख खान को गधा था उस मूवी में, सुष्मिता सेन ने कर भी दिया, वो शाहरुख खान को थप्पड़ नहीं लगाई कि अबे छुट्टी तुझे क्या जैसे पहन रही है। एंड आल्सो वो दूसरा लड़का वो कितना आई फॉरगॉट इसका नाम क्या, दूसरे कैरेक्टर का क्या नाम है उसका, वो हीरो जो कभी चला नहीं,
अरे उसका दूसरा संजू जिसके लिए पागल हो रखी होती है, जाहिद खान, वो खुद कितना चूतिया सा होता है। आई मीन उससे एकदम मतलब खुद भी कितना चूतिया होता है और उसके एक्सपेक्टेशंस देखो कितनी हाई। और मतलब वो लड़की उसके बाल तो काट दिए, उसका मुंह तो धोता है एटलीस्ट। मतलब हाँ चलो, इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस उसकी भी। बट हाँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट। या media representation is definitely not helping. That's true. Yeah. Also, अभी जब अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना, when you were talking about internalized misogyny और slut shaming वगैरह, there's also this one point about women feeling guilty खुद से ही, because उन्होंने अपने आप के ऊपर ही कुछ ऐसे norms वो कर रखे हैं, impose कर रखे हैं, and खुद के दिमाग में if they don't meet these norms, these standards, they feel bad about it. Which is again, I think, internalized misogyny, right? Oh yeah. I have an example. I do that to myself. हाँ बहुत. I think we all do that to myself so much. एक मैं example देती हूँ. I think I told you about this. Remember I did that common purpose sustainable goals वाला program. So it was a program I attended, online program. It was a workshop thing, sustainable goals and how do you plan to take them forward. So they had like a list of 14 sustainable goals given by UN, and then it divided us in groups, and then we discussed that how do we plan to take these goals forward. So I was in the goal of gender equality. So we were a group of, I don't know, 20-25 people. I forgot how many we were. So हम ऐसी बात कर रहे थे. So there was this one girl from UK. I forgot which university or something, but she became a teenage mom. ठीक है. तो अब वो अपने अंडरग्रेड में थी, सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर, एंड बेटी बड़ी हो गई थी, अब कुछ 3-4 साल की थी. तो वो काफ़ी शी वाज स्ट्रगलिंग विद वर्क एंड अपनी बेटी, वो अपने पूरा दिन कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आके शी यूज्ड टू स्टे विद हर डॉटर, रात में कुछ जॉब्स करती थी, ऑड जॉब्स वगैरह वगैरह. शी वाज जस्ट टेलिंग अस अबाउट दैट, एंड देन शी सेड कि अब तो मैं डेटिंग भी नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज आई फील कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई शुड बी एबल टू स्टे एट होम विद माई डॉटर. कि मतलब इट वुड बी सो रॉन्ग दैट इफ आई स्टेप आउट उसको छोड़ के एंड डूइंग समथिंग लाइक आई डोंट नो फॉर डेटिंग और मीटिंग फ्रेंड्स, वो कितना गलत है मेरे पार्ट पे दैट आई एम लीविंग माई डॉटर बिहाइंड. बट देन शी ऑल्सो हैड दैट रियलाइजेशन कि जो उसकी बेटी का फादर था, दे वर नॉट टुगेदर, दे वर नॉट अ कपल, बट ही वॉज लाइक एन इन्वॉल्व फादर. ही नेवर फेल्ट गिल्टी अबाउट गोइंग आउट partying with his friends and he was full on dating वगैरह. He never felt guilty about the fact कि अरे मेरी भी तो बेटी है ना, I have responsibility of going and meeting her. But it was only her who was always feeling guilty कि नहीं, मतलब मैं बाहर जाके फ्रेंड्स से टाइम स्पेंड करूँगी, I'll go out on a date, इससे अपनी बेटी के साथ ही ना रह लूँ. So this is again I feel internalized misogyny. Because you have these मतलब हमारे अराउंड स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हम it is kind of easier to when you're doing this to others, you can self-reflect and be okay, because you don't want to be a bad person. But when you're doing it to yourself, it is so difficult to detect, and you don't even realize that this is internalized misogyny. You just feel that, oh, I have to improve myself and I have to be a better person. I'm self-improving, but that's not true. मतलब हाँ, मैं अपने ऊपर सोसाइटी वाले इम्पोज स्टैंडर्ड्स लगा देना और उससे बाहर आना. I think this is what most people would even feminists who have realized, मतलब वो कुछ गए गुजरे ही होते हैं, लेकिन even when you realize and you had the realization about internalized misogyny and you worked on yourself to overcome it. True. This is something I still cannot crack. True. I mean, all of our identities. I don't look good. And I look at myself in the mirror and I don't look, now that I've embraced my femininity, if I look, less feminine, I feel like my face doesn't look as good and I have to go out. तो मतलब मेरा तो दिमाग अपने ही आपको अटैक करना शुरू कर देता है, like मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है. But like to exist and to feel good, do I need to look a certain way? True. Or do I need to look a certain level of pretty? I don't, but I'm doing this to myself. Because मैंने सोसाइटी से इंटरनलाइज कर लिया है कि भाई लड़की तो ऐसी दिखनी चाहिए और ऐसी खूबसूरत होनी चाहिए, और जब वो बाहर दावत पे जाएगी या वो डिनर पे जाए या दोस्तों के साथ जाए तो उसने CCDC बन के जाए, करना है, वरना तो वो भी
CCDC नहीं. See, this is a very thin line. Like you can't be somebody underdressed and you can't be somebody overdressed. Exactly. And you have to walk this weird arbitrary line जो आप अपने ऊपर ही इतनी लगाते हैं. True. That is true with respect to weight. That is true with respect to, I don't know, dressing up. That is true with respect to success in career. True. Matlab, you know as a woman that the barriers that come to you are different than that of men. True. ठीक है ना? For men it is simpler in the sense कि भाई when you put in a certain amount of effort you get that return और वो barriers बीच के कम होते हैं क्योंकि societal expectation भी उनकी career की होती है. ठीक है. आपके बीच में इतने सारे बैरियर्स होते हैं. You're constantly fighting your own self. ठीक है ना. कि अच्छा अगर बाहर निकलना है तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि obviously मुझे डर लगेगा. मेरा अराउंड circumstances ये हैं तो मैं पहले अपने उस डर से लड़ती हूँ और बताती हूँ कि you know maybe I'm being too paranoid. या अगर डर है या रिस्क है तो मैंने तो ये लेना ही है क्योंकि I cannot be scared inside. ठीक है. तो पहले मैं अपने डर से लड़ती हूँ. फिर मैं इस डर से लड़ती हूँ कि मैं इस तरीके की दिख के बाहर जा रही हूँ. ठीक है. तो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं. या अगर मैं थोड़ी ज्यादा ड्रेस्ड हूँ और मैं फलां इलाके से निकल रही हूँ तो क्या मैं we are constantly policing on ourselves. मतलब घर से बाहर निकल कदम रखने से पहले ही हम इतनी अंदर इमोशनल लेबर लगा चुके होते हैं because of the way this world is. I feel forget about stepping out. मेरा जो करियर है वो उस तरीके से स्मूथ चलेगा जिस तरीके से लड़कों का चलता है. जबकि especially if you're in the corporate world, तो capitalistic world में तो standards भी सारे masculine. True. You have to be assertive. You have to be, less emotional and apparently rational. क्योंकि emotional तो demonize ही हुआ है. True. ठीक है ना. Rationality चाहे वो जितनी hyper rationality और उसने दुनिया का जो आज हाल कर दिया है पैसे वाली rationality ने. दुनिया खत्म होने को आ रही है. Resources खत्म हो गई है. जंगें हो रही हैं. लेकिन hyper rationality तो भाई don't be emotional. Think with your mind, but maybe be emotional, idiot. Maybe that will help. I know. और also हम अपने ऊपर ही लगा रहे होते हैं कि भाई इतनी battles हम fight कर रहे हैं. हम सारी मेहनत अपनी invalidate कर देते हैं. I think if my therapist hears me, एक दिन मुझे ही सुना देगी बेटा तू खुद ही सुन ले क्या. क्यों आती हो मेरे पास फालतू पैसे बर्बाद करती. एक सेकंड को आशुमा नहीं सुनते. एक सेकंड को हम सोचते हैं कि हम what we go through. But हमारे standards success के अपने वो masculine standards. And also forget about stepping out. तुम घर में सोच लो ना. अपन खुद पे ही इतने सारी responsibilities डाल के रखते हैं. Being like घर में being a daughter, being a sister, कितनी सारी चीजें अपन खुद सेल्फ इम्पोज होती है. तुम तो बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल हो उसका. तुम तो हो ही बहुत ही एकदम प्रॉपर क्लासिक एग्जाम्पल. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू बट all of us being a sister, daughter, I don't know, I mean as a friend also, being a girlfriend, not like as a वो love la pada वाला girlfriend, being like a normal girlfriend वाला. We have so many self imposed norms खुद पे. But not like stepping into the professional world. All the ways we identify ourselves, like being an individual, all these categories, daughter, mother, sister, a working woman, professional, kuch bhi, we have these imposed norms upon us. But एक चीज I would say, I think a misogynist person can easily hear this podcast and say, तुम्हारे सारे मसले तो तुम्हारे ही create हुए हैं. तुम लोग मर्दों में क्यों चढ़ते रहते हो? तो but लेकिन they're stemming from those. So I would want to clarify that हमारे सारे मसले हमारे created नहीं है. हाँ, we are living in this patriarchal fucking world. Exactly. We have been brought up that way. Because we are part of the world which has a power structure. Exactly. And we're trying to fight that world and we realized कि ये सारी चीज जो हम बाहर से लड़ने की कोशिश करें हमारे अंदर भी आ गई हैं और हम दूसरों को तो हमने चलो स्पेयर करना शुरू कर दिया है because we're starting to have this realization. हम अपने आप को स्पेयर नहीं कर रहे. This is what I'm saying. I'm not saying that आपकी छुट्टी है. हाँ, definitely नहीं. We have been brought up that way. इतनी अगर if I go back, I don't even have to go back. अगर मैं अभी भी सोचूं ना, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि लोग इतने casually, unconsciously बोल देते हैं. But like if you peel these things, तो अंदर ऐसे भर के
पेट्रियार्की निकलेगी ऐसे मटके भर भर के, एंड इतनी छोटी छोटी बातें होती है, समथिंग एज रैंडम एज आई डोंट नो. Yesterday I was not yesterday, like a few days back I was talking to my mother. We were talking about ऐसा गाड़ी चलाना वगैरह. तो my mom she just slipped in कि मेरे को तो डर लगता है ऐसे हाईवे पे ना बिना पापा के तुम लड़कियां लोग हाईवे पे गाड़ी लेके चली जाती हो. तो इतनी छोटी छोटी. अब ठीक है, being a mother I get her concern that she's concerned about my safety, but it's not just that. It is not just that, and it is so clear. और मतलब और फिर को बोलो ना, जैसे I just say that okay you don't let me do that but I do that, you know I do that, right? You know I do that. क्योंकि अगर हमारे साथ में रहोगे तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा. Like because I'm not living with them right now and I'm living away from home. तो मैं मतलब but okay but अगर क्या वो सेम रूल्स किसी लड़के के लिए भी अप्लाई होते हैं? बिल्कुल नहीं होते. Like guys don't have to go through shit like that. अब ठीक है मैं कितने लड़कों से मिली हूँ, जब I have these arguments with my boy like my guy friends they are कि नहीं लड़कों को भी होता है, कितने तरह के मसले होते हैं, हमें भी घर पे टोका जाता है. मतलब कि आई एम नॉट डिनाइंग कि तुम्हें टोका नहीं जाता, ठीक है. लाइक ऑल ऑफ अस अपन ठीक है बीइंग लाइक ग्रोइंग अप, अभी तक भी वी हैव प्रॉब्लम्स घर पे कि मत बोलो ये मत करो, which is normal. It shows that okay you come from a normal household कि ठीक है मम्मी पापा हाँ मम्मी पापा टोक रहे हैं आपको, लाइक यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इट. सो ठीक है आई एग्री कि ठीक है टोका जाता है, but still it is not same like a girl being tokified and a boy being tokified. These are two different things, two very different things, and boys who can't understand this shit. एक तो मुझे ये समझ नहीं आती मर्दों को अपने सारे मसले तब क्यों याद आते हैं जब हम अपनी बात करते हैं. हाँ तुम आगे बोलो, तुम्हारे जेंडर से रिलेटेड थे तो पहले बोलते ना बोलते तुम तो बोल रहे होते. बट योर प्रॉब्लम एंड योर टोका जाना इज नॉट बिकॉज ऑफ योर जेंडर. Exactly. Our टोका जाना is much more and it is a constant attack. ज़्यादा हो गया attack. It is a constant reminder. It is an attack. It is an attack. कोई ज़्यादा नहीं हुआ. It is an attack because it's a constant reminder that you are something less. True. ठीक है ना. और जब ये लड़की कहते हैं ओ तो हमारे साथ भी होता है तो निकलो तुम भी चलो. Trivializing our experience. And also ठीक है given that ये भी I agree with that, but ठीक है तुम इतना मसला तुम भी बात करो. Why do you have to bring up your maslas and we are talking about that कि नहीं हमारे साथ भी होता है. You start at the first place ना, तुम भी आओ बातें करो, तुम भी अपनी निकालो, तुम भी रह लिया. How this patriarchal world which you uphold and which benefits you और जिसको खत्म करने की हम बात कर रहे हैं, तुम भी बताओ तुम्हें वो कैसे डिसएडवांटेज कर रहा है. तो फिर तो हम एक ही पेज पे, but then we're not on the same page because you just want to hate on us. True. Like feminist is a bad word after all. Yeah. Feminist तो समझ नहीं आता the F word क्या है. I think it's the worst word आज की दुनिया में. गए वो जमाने जब फक खराब बढ़ता था, अब तो फेमिनिस्ट ही है. वो तो हम आपस में अब कह देते हैं फेमिनिस्ट है. अरे बाबा हाँ. I think I told you I was sitting with some people like a few days back and we were watching Shark Tank. So there was this guy who I forgot the judge who was, I forgot her name. like ये तो feminist types लगती है. तो मैंने okay so what's bad? I think I told you. मैंने किसी अच्छा नहीं बताया था मैंने तुम्हें. ये नहीं बताया था. अच्छा नहीं पता. What the hell? हमने डिस्कस किया था ये नहीं किया. So I was sitting with a group of friends, like a couple of friends a few days back. हम लोग Shark Tank देख रहे थे. तो Shark Tank में I think I forgot Mama Earth की CEO of some this woman CEO, okay. तो लड़का बोलता है कि अरे तो feminist types लगती है. तो मैं उसको से देख रही थी कि okay. I mean so what is your point? So like I mean कुछ आगे जोड़ना है. What is your point है? तो feminist types लगती है. Also उसे अपने बराबर की किसी भी feminist type पड़ जाती है ना झाड़ू. There's one more example but I'll leave that out for. I'll leave that. Okay. I don't know what that example is. For some time. Anyways, yeah. अरे yeah. Internalized misogyny से मुझे वो वीडियो याद आती है. मैं तो बताएगी सादा कवल की. कौन? ओह. वैसे से हमारा कल्चर क्या है? हमारा मियाँ है. हमारा कल्चर हमारा मियाँ है. खाने का भी बताऊंगा.
कपड़े something should talk. Thank you Sadaf Kawal for pointing it out so clearly that our culture is so misogynist. Heads up. बेटा तुम लोग को समझ नहीं, हमको समझ नहीं आई, हम उस पे हेट कर रहे थे। सदफ कवल जो है रिटायर कर दी थी और हमें बता दी थी हमारा कल्चर हमारा मियाँ है, मीन्स कि हमारा कल्चर मिसोजिनिस्ट है और हमारा कल्चर हमारा मियाँ है, तो आप कौन हो? हमारा मियाँ है। My God. And then these people have these guys have problem. हमारे भी मसले होते हैं। भाई क्या मसले हो सकते तुम्हारे लाइफ में? बड़े मसले। I don't want to invalidate. Yeah. Let's not invalidate, but yeah, still, I have a problem. I very visibly have a problem with guys who come like हमारे भी अलग तरह के मसले होते हैं. When I'm talking about my maslas, कि shut the fuck up and listen to me, listen to my maslas right now. तू पहले कॉल कर देता, ठीक है, तेरे को मसले तो तू पहले कॉल कर देता, तो अपन कॉल ही उस पे चालू करते कि ठीक है तेरे मसले सुनने हैं. लेकिन when I'm talking about my maslas, तुम्हें इतना मसला था कि सारा कमाई का प्रेशर हम पे होता है, तो तुम अपनी शुरू की मूवमेंट हाँ कर लेते. Exactly. I know. अब याद आ रहा है इतने साल से फेमिनिज्म है, उसके बाद तुमको याद आ रहा है कि तुम पे बड़े मसले. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर हम कह रहे हैं कि चॉइस होनी चाहिए और हमें भी करियर में हमारे भी बैरियर्स कम होने चाहिए, इफ वी वांट दैट, तो उससे फायदा तुम्हारा नहीं होगा है. Exactly. तुम्हारा फाइनेंशियल बर्डन कम नहीं हो जाएगा. Calm down. I know. This is. I think I was again having this discussion a while back with someone. हमारा discussion ये था कि चलो ठीक है, even guys didn't opt for that, कि क्या पता उन्होंने थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इतनी बड़ी कि हमें सबका खर्च उठाना हो, हमें सबकी देखभाल करनी हो, कि वो कल को वो भी कह सकते हैं कि दिस वाज अ ड्यूटी लाइक वी डिडंट वांट, कि हमारे पे इम्पोज करी गई है. तो ठीक है ना, यू कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट. इन द एंड लाइक चलो फेमिनिज्म का मुद्दा क्या है? इफ यू ब्रेक इट डाउन, इट कम्स टू इक्वालिटी एंड हैविंग द लिबर्टी टू मेक योर ओन चॉइस. ठीक है, तो यू कम एंड स्पीक अबाउट इट ना. अगर आपको इतना बड़ा मसला है तो यू कम एंड स्पीक अबाउट इट. इट्स ऑल अबाउट हैविंग टू मेक लाइक हैविंग द एजेंसी टू मेक देयर ओन चॉइस. तो अगर इतना, और चलो ठीक है फिर एक हाँ बोलो. You are the very person. You most of the time, because I don't think patriarchy is about men or women. There are a lot of misogynist women, like we're talking about internalized misogyny, who impose their misogyny on others. आंटियों से तो हम वाकिफ हैं, प्रेम की आंटियों से, ठीक है. So it's not about gender, but most of the time, because of the power dynamics that are involved, it is men who are upholding and who are benefiting from, the patriarchy being upheld. तो अगर आपको इससे नुकसान हो रहा है और आप self damage में आपको करें, because you are the ones, men are the ones making fun of other men when they cry. Men are the ones making fun of other men when they act feminine, or where they wear clothes that are not as masculine, or when they don't indulge in पता नहीं जो locker room talk होती है, ठीक है ना, आपस में लड़के बैठे होते हैं, they are always pulling each other's legs, and nothing is off the table, and apparently that is बस वही closeness होती है. क्या बात करते हो? तो genuine I want to know. डिस्कस कर लें तो सारे मसले हल. आई जेन्युइनली वांट टू नो कि लड़के साथ में बैठते तो बातें करते क्या है, व्हाट डू दे टॉक अबाउट. अगर ढंग से सच्ची में, इट इज सो इजी फॉर अस. They don't share their issues with each other. Exactly. They share their issues with the women in their life. Yeah. या तो वो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि चाहे जो बंदा मुझ पे जोक मार ले, मेरी तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है और मुझे तो कुछ बुरा ही नहीं लगता. ट्रू. झूठे. फिर तुम अपने गुस्से जो है ना अपने घर की औरतों को निकालते हो, अपने आप को इतना डिप्रेस कर कर. True. That's true. Yeah. अब लड़कों में आ गए सब इंटरनलाइज. I think that is going to be the problem in all of our episodes. इंटरनलाइज मिसोजिनी वाली बात याद आई जब मैं दोस्तों की बात कर रही थी. Okay. That this idea that I'm different from girls, so I don't hang out with other girls. Yeah, girls are so much drama. ठीक है. There are so many people, मतलब हम भी बड़े होते हुए at some point we thought of this, या ये सोच फीमेल फ्रेंडशिप्स को डिमोनाइज कर देना या उनको लुक डाउन करना because they share emotions, or they sometimes set boundaries with their friends और उस वजह से conflict हो जाता है.
ठीक है ना? तो men think और people tend to think that male friendships are better क्योंकि उसमें conflict होता ही नहीं है. कुछ बातें ही नहीं करते तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कैसे? हाँ एग्जैक्टली, कुछ बातें करते ही नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कैसे? ट्रू ट्रू. कुछ बातें करते ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा कैसे? ट्रू. ठीक है ना? अरे इससे मुझे याद आया, there was this guy who was constantly on the phone. Okay. Who used to be constantly on the phone. Okay. ठीक है? And then I was like, of course he has a girlfriend because no boy is like that. एक दो दिन होता है, कभी-कभी होता है, but if somebody has this consistent pattern across months of being on the phone all the time, you're not talking to your guy. Yeah. Because you people don't have enough to talk about. इतनी तो mental capacity, emotional capacity नहीं होती. या कोई It is a dead giveaway. Yeah. Isn't it not? Yeah, it is. इतनी तो इमोशनल कैपेसिटी नहीं होती लड़कों को में आपस में आके ऐसे अपनी भावनाओं की बातें कर सके. I mean, we are truly blessed that way. मुझे लगता है कि अपन जैसे ना actually I genuinely had a, चलो I give this to boys कि कुछ होता है वो कर भी नहीं पाते, वो बेचारे करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि चलो इतने में से कोई इक्का दिक्का होगा जो सच्ची में करना चाहेगा, उस बेचारे को वो स्पेस ही नहीं मिलेगी. तो वो सिस्टम ही नहीं है ना, वो स्पेस ही नहीं मिलेगा कि बेचारा आके करे, और अगर बेचारे कर भी लेगा तो फिर इतने सारे टैग्स विल फॉलो. किसके साथ करता है फिर वो अपने इमोशन शेयर किसके साथ करता है? अब बेचारा होते हैं लड़के जैसे आशिक जिनका ब्रेकअप शेकअप हो जाता है, कहाँ जाके बात करें, लड़की तो चली गई. कहाँ लड़कियों से ही करते हैं, लड़कियों से ही करते हैं. तो इतनी करेज नहीं होती फेस करने की कि वो हमारे अंदर भी इमोशन है और हम इंसान हैं और हम वल्नरेबल हैं, तो या तो वो धड़म करके टॉक्सिक किस्म के जो होते हैं वो धड़म करके उतार देते हैं. ठीक है ना? दे अनलोड इन वेरी हार्मफुल वेज. या फिर अगर वो ढंग के इंसान होते हैं तो फिर वो ढंग से मतलब एक्सेप्ट करते हैं और वो करते हैं. बट इट कम्स डाउन टू वुमेन बीइंग नीडेड. ठीक है? और हमने internalized misogyny में वापस आया. I was trying to find a link, but so many women also, despite the fact that it is so important for them to embrace their emotional nature, and because in this world right now, I think the biggest solution in this world is emotional intelligence. मुझे अपनी research से पता चला था जब मैं education में थी कि how important emotional intelligence is in this really polarized world वगैरह. So we are the ones who at least are more likely to have emotional intelligence क्योंकि socially acceptable है हमारे लिए emotions होना. True. ठीक है ना? तो आप उसको embrace करने की जगह, आप उसको अपना strength बनाने की जगह, just because it is something that is seen as feminine, and it is feminine, मतलब लड़कों में भी वो feminine trait हो सकता है. अगर हम masculinity femininity में देखें तो emotional होना या it's a feminine trait. तो आपने क्योंकि पूरी की पूरी फेमिनिटी को डिमोनाइज किया हुआ है, तो द वे यू फील यू आर एक्सेप्टेबल इज एज अ वुमन आल्सो इज टू सप्रेस योर ओन इमोशंस. ठीक है? और आप अपनी जेन्युइन नीड्स एंड वैसे द ओनली एक्सेप्टेबल इमोशन फॉर वुमेन इज आल्सो crying, for which they are also made to be stupid and weak and ये वाला. ठीक है ना? By the way, crying is important. It is very important. I agree. The days मतलब अगर मैं भूल जाती हूँ कि मैं upset हूँ और मैं रोती नहीं हूँ तो पता नहीं मैं भी रेज में चली जाती हूँ. And the days I'm able to cry and let it go, I don't. ठीक है? So crying is important. Please रोया करें ताकि आप दूसरों के साथ all the लड़कास in the world. मेरे लिए भी, मेरे घर वाले भी बोलते होंगे खुदा प्लीज तुम भी रो लिया करो, हमारी जान पे बताया करो. तो हम खुद भी women themselves are holding themselves to this masculine standard because they've been told कि भाई emotional का मतलब होता है रोना. सिर्फ रोने के अलावा कोई इमोशन होता नहीं दुनिया में. और तुम रोती हो तो तुम भी. और आपने एक्सेप्ट कर लिया. गधे के बच्चों ने आपको ये सिखाया जिनको खुद को कुछ इमोशन आता नहीं. और उनके इमोशन इतना rage. This is what is rage, okay? This is what is rage. I mean, we are trash talking men, I think. I'm just a very angry person. We are trash talking men. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अपने एपिसोड से.
which I think will happen in all of our episode. मुझे अपने हर एपिसोड में यही होगा that अपन जो टॉपिक चालू करेंगे वो घूम घुमा के लड़कों पे आ जाएगा. But frankly I don't mind because इतना सब कुछ रेज है अंदर, तो ठीक है, let's put it out. But also हर एपिसोड में मैं इसलिए भी चीखूंगी क्योंकि मेरे अंदर भी मिसोजिनी इंटरनलाइज्ड है. And the only way I allow my vulnerability to come out is through anger, because anger is an acceptable masculine and strong emotion. Yeah, that's true. वाह, अपने आप को भी मैंने सारा एनालाइज कर दिया सबके साथ. क्यों तुम्हारी थेरेपी मैं करूंगी, मुझे दिया करो तुम पैसे. ये थोड़ी बहुत बाकी तुम खुद कर लेती हो, जो थोड़ी बहुत है वो मैं कर दिया करूंगी. I might as well make some morning. मुझे तुम्हारे मसले ही पता है. हम दोनों आपस में एक दूसरे को फक अप करते हैं कि हम एक जैसे हैं, और इस मामले में तुम रहने दो, मैं पैसे दे दूंगी. You know, I was genuinely thinking अभी जब we were talking about not expressing yourself, crying, being emotional, how expressive are we? How expressive are I mean, think about it. बाथरूम में crying allowed होती है आजू-बाजू. Wow! Wow! Great. बस एग्जैक्टली यही चाहिए था अपन को एपिसोड खत्म करने के लिए. एकदम जो तुमने ये जो 6 मारा है ना, यही चाहिए था अपन को. एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया रफिका बाजी, क्या बात बोली आप. सुना दी है मेरे अंदर एक मिसोजिनी को कूट के. वेरी वे ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट लाइक हेट कमेंट्स कि दीदी अपना खुद का देख लो, हम तो देख लेंगे. अपना देख लो हम, मसला तो आप में ही है. But yeah. आप जितनी भी मिसोजिनी के बारे में बात करें, आपके अंदर जरूर होगी. So keep reflecting. I think this is a very big step अपने आप में ही, that you realize कि हाँ चलो ठीक है, it's a slow process. Acceptance is a very good thing. आपने सबसे बड़ा important step है self realization. Realize कर ले, वही बड़ी बात है. And ठीक है, we are so old, like अपन को अब जाकर realize हुआ है, तो मे बी क्या पता. हाँ ठीक है, आई डेंट वॉन्ट टू फील लाइक अ बूमर. मैं बोलती कि मैं यंग हूँ तुम बुढ़ी हो, तो अच्छा नहीं लगता ना. आई वाज जस्ट बीइंग इंक्लूसिव, बट ठीक है, यू रूइंड इट फॉर योरसेल्फ. तो क्या पता किसी का भला हो जाए. ठीक है, रो लेना बाथरूम में जाके, अभी मसला नहीं है ऐसा. खैर ओके, कमिंग बैक. तो हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है. एंड क्या पता हम किसी का भला कर दे, कोई सुन रहा हो, कोई अपन से छोटा बच्चा और वो अपने आप के बारे में रियलाइज करे. बच्चा बच्ची, तुम कहाँ चली गई? नहीं तुम अपनी हाँ, शी इज बैक. तो या, so this was us for today. Guys, girls, whoever is out there listening to us. मैंने guys बोला, मैंने कि यार guys को बोलो. Gender exactly. Okay. #we are woke. हाँ, no binaries. Okay, we are very woke. तो खैर, so this was us for today, and just like disclaimer, हो सकता है हमारे सारे एपिसोड ही they'll come down to this कि we'll be trash talking men. So if you want to do the same, please join us and like, share and subscribe. Bye. Bye.